अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वजीउद्दीन और आप देख रहे हैं फुटबॉल थंडर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चलूँ कि हमें एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट मिला है सैयद हम्माद शाह की तरफ से। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा और बाकी के यूज़फुल लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आप लोग देख सकें। तो आइए देखते हैं क्या गिफ्ट है हमारे लिए। तो गाइस, कैसा लगा आपको सैयद हम्माद शाह की तरफ से फुटबॉल थंडर कम्युनिटी के लिए शानदार गिफ्ट। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सैयद हम्माद शाह, बहुत ज़बरदस्त। तो अब से ये भी ऑफिशियल वीडियो की स्टार्टिंग हुआ करेगी। थैंक्स हम्माद फॉर दिस। सो अब हम चलते हैं आज की अपनी एपिसोड की तरफ। तो जून के महीने में बहुत कुछ हुआ फुटबॉल के वर्ल्ड में जो कि मैंने आपसे शेयर करना है। तो जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में फुटबॉल थंडर की लास्ट वीडियो थी उसके अंदर UCL का जो पूरी कैंपेन थी उसका मैंने एक ब्रेक डाउन करके एक तजिया पेश किया था। तो अब मैं डायरेक्टली उनका फाइनल की तरफ। तो UCL फाइनल खेला गया था टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल इन वेंडा मेट्रोपोलिटानो इन मैड्रिड। बहुत कोई अच्छा फाइनल नहीं था सैडली। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होती है एक UCL फाइनल से, एक चैम्पियंस लीग फाइनल किस तरह से खेला जाना चाहिए और कितनी उसमें फाइटिंग स्पिरिट होती है और कितना उसमें जीतने का जज्बा होता है, तो ये सब कुछ हमें देखने को नहीं मिला अपने इस फाइनल में। सैडली तकरीबन अराउंड द वर्ल्ड सारे फुटबॉल फैंस का तकरीबन यही कहना है। तो कुछ इस तरह से था कि इन द सेकेंड मिनट ऑफ द मैच ही जो है वो लिवरपूल को एक पेनल्टी मिल गई बिकॉज ऑफ हैंडबॉल इन द पेनल्टी एरिया ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर्स। तो जो कि कैसे मिस हो सकती थी मोहम्मद साला से। तो मोहम्मद साला ने एक प्यारी फिल्म के थ्रू गोल करके लीड दे दी लिवरपूल को। और आफ्टर मोहम्मद साला गोल उसके बाद मैच काफ़ी देर तक स्टार्टिंग में फास्ट ही था, लेकिन देन वो स्लो डाउन होता गया और टॉटनहम की तरफ से फाइटिंग स्पिरिट वो नज़र नहीं आ रही जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद उसी तरह से और जिस तरह सेमीफाइनल में उन्होंने एजेक्स के अगेंस्ट सेकंड हाफ में कमबैक किया था। तो एवरीवन वाज होपिंग कि सेकंड हाफ में कुछ और, लेकिन अनलकीली टॉटनहम वाज अनेबल टू डू एनीथिंग इन द सेकंड हाफ एज वेल। और मैच 87 मिनट तक ऐसे ही 1-0 चल रहा था। फिर 87 मिनट में लिवरपूल के ओरिगी ने एक दूसरा ब्यूटीफुल गोल करके लिवरपूल की जो विक्ट्री है उसको मतलब स्टैम्प लगा दिया। बस मैच इज़ फिनिश्ड फॉर टॉटनहम हॉटस्पर्स जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और आफ्टर दैट दे वर डेड। तो इस तरह से इस साल का यूएफए चैम्पियंस लीग 2019 के जो चैम्पियंस हैं वो लिवरपूल हैं। सारे लिवरपूल फैंस यकीनन पूरी दुनिया में बहुत खुश हैं इस हवाले से। तो जो लिवरपूल के फैंस में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई कैंग्रेचुलेट यू ऑल फॉर द विक्ट्री। और बहुत अमेजिंग सीज़न था ये पूरे का पूरा ही लिवरपूल फैंस के लिए। उन्होंने जिस तरह से अपनी लीग खेली है कि ऑन द लास्ट मोमेंट लीग डिसाइड हुई है और दे वर द रनर अप्स ऑफ द लीग। तो उसी तरह से इस बार UCL फाइनल तक वो लोग पहुँचे जिस तरह लास्ट टाइम पहुँचे थे UCL फाइनल में, उसी तरह इस बार पहुँचे। थैंकफुली इस बार मैड्रिड उनके अगेंस्ट नहीं था, सो दे हैड टू विन और दे डिड। यकीनन उस एक्सपीरियंस का उन्होंने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया जो कि टॉटनहम लैग कर रही थी। तो अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लिवरपूल। तो आगे चलते हैं भाई। इसके साथ साथ ही जो इस साल चल रहा था UEFA नेशंस लीग जिसके सेमीफाइनल्स चल रहे थे। इस सेमीफाइनल्स में पहला जो कंपटीशन था वो था पोर्चुगल वर्सेस स्विट्ज़रलैंड। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस मैच से कि बहुत टफ होने जा रहा है और एज एक्सपेक्टेड इट वाज अ थ्रिलर टू वॉच। बहुत मज़े का मैच था। जिन लोगों ने देखा लेकिन बहुत इस मैच को एंजॉय किया होगा। स्टार्टिंग से दोनों टीम्स फाइट कर रही थी, कोई टीम दूसरी को जीतने का मौका नहीं दे रही थी। और who else but क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक स्टनिंग फ्री किक वंस अगेन उन्होंने स्टनिंग फ्री किक के थ्रू गोल स्कोर किया और पोर्चुगल को 1-0 की लीड दी। और दैट लीड really helped Portugal team to keep possession of the ball and play their own style and keep attacking Switzerland। और यही उन्होंने किया और राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्विट्ज़रलैंड टू। उन्होंने बहुत अच्छा आगे से कम बैक करने की कोशिश की, बहुत अच्छा गेम खेला
लेकिन जहाँ उन्होंने मिस्टेक की स्विट्ज़रलैंड ने, दैट वाज द फाइनल थर्ड, कि पोर्चुगल के टीम तक जब वो लोग पहुँचते थे तो वहाँ पे उनसे कोई खातिर ख्वाह अटैम्प्ट नहीं होती थी, तो दैट वाज काइंड ऑफ सैड फॉर स्विट्ज़रलैंड। जबकि सेकंड एंड पे जब पोर्चुगल अटैक करने आता था तो एवरीवन वाज लाइक बस अभी गोल में जा रहा है, अभी गोल में जा रहा है। सो ये हिसाब किताब चल रहा था। So in the later minutes, who else but again Cristiano Ronaldo got another opportunities to score a stunner, and he did. And after just 2 minutes or so, he again got another chance, and he never misses such chances of hat-trick. So it was a big hat-trick for Cristiano Ronaldo in the semi-final of an international competition, UEFA Nations League. तो इसके साथ जो सेकंड सेमीफाइनल था दैट वाज बिटवीन नेदरलैंड एंड इंग्लैंड, जो कि नेदरलैंड ने कन्विंसिंगली 3-1 की लीड से जीता, जिसमें डेजेट वॉकर और होम्स ने गोल स्कोर किए। इट वाज एन अमेजिंग गेम एज वेल, जिसमें नेदरलैंड वाज क्वाइट कम्पीटिव ऑल द टाइम और दे वर नॉट letting England to make a mark। हालांकि इंग्लैंड ने एक गोल स्कोर कर लिया था पेनल्टी पे इंग्लैंड के रैशफोर्ड ने, तो लेकिन नेदरलैंड ने उसको अच्छे से टैकल किया और अपनी गेम को स्लो करने के बजाय मज़ीद फास्ट किया बेसिकली। और फिर इसमें ये था कि और वॉकर जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने 97th मिनट में एक बेसिकली ओन गोल स्कोर किया था, जिसका खातिर और नुकसान हुआ इंग्लैंड को, बिकॉज यू नेवर वांट टू स्कोर एन ओन गोल इन द सेमीफाइनल ऑफ अ कॉम्पिटिशन, स्पेशली व्हेन इट इज़ एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ऑफ योर नेशन लाइक इट वाज इंग्लैंड between Netherlands and us. So we would never like to score an own goal in such competition, but it was unfortunate, but it happened. So what else we can do? So the final was between Portugal and Netherlands, and everyone was expecting a nail-biting final। एक तरफ नेदरलैंड है, दूसरी तरफ पोर्चुगल, एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो है अटैक में, दूसरी तरफ वैन डाइक डिफेंस में। So it had so much to focus on कि आखिर क्या होने जा रहा है इस मैच में। और इट वॉज अ नेल बाइटिंग कॉम्पिटिशन, बहुत ज़बरदस्त फाइनल देखने को मिला। जस्ट इन द मिडल ऑफ द सेकेंड हाफ एट 60th मिनट, Portugal's PD scored a stunner goal, which is a dream goal in a final. For especially for such a youngster, it is of course a dream goal in a final जो उन्होंने स्कोर किया। And this is how Portugal won UEFA Nations League's first edition. And the player of the tournament was Bernardo Silva, who had an amazing year, amazing season, one not to forget for him. And young player of the tournament was Frankie de Jong, जो एक यंगस्टर है और he plays very well. So that's how this competition ended, with joy for Portugal and hard luck to other teams. Let's go back a little bit again. There was FIFA Under-20 World Cup going on in May-June this year, which was won by Ukraine, and the finalists were Ukraine and Korea, and Ukraine won 3-1. It was a wonderful match as well. Every World Cup game is amazing to watch, so that's how it is. Another amazing tournament going on this year is FIFA Women's World Cup 2019 in France, where different teams from all around the world are competing in all the women team of football, and we are witnessing some amazing football from the women as well. And the teams which competed were Germany, Nigeria, Sweden, Canada, Italy, China, Netherlands, Japan, Norway, Australia, England, Cameroon, France, Brazil, Spain, United States, and much more teams were there. And it has been an amazing tournament to watch. And currently the World Cup is in its semi-final stages. In the round of 16, it was Germany versus Nigeria, where Germany won 3-0. Sweden versus Canada, where Sweden won 1-0. In the other match, it was Italy versus China, where Italy won 2-0, and Netherlands won 2-1. In the other bracket, it was Norway versus Australia, which was decided on the penalties when it was 1-1 equal at the full time.
and then Norway won 4 goals to 1 in the penalty shootouts. And then there are England versus Cameroon. England won 3-0. France versus Brazil. France won 2-1, knocking out Brazil out of the tournament. And then there was Spain versus United States, and what an amazing result for United States to knock Spain out of the World Cup, and United States won 2-1. And then in the quarterfinals it was Germany versus Sweden, where Sweden knocked out Germany 2 goals to 1. And the other side it was Italy versus Netherlands, where Netherlands won 2-0. England won 3-0 to Norway, and United States is brilliant here in this World Cup, and they knocked out France team 2-1. Well, another amazing tournament for the football fans that is going on these days is Copa America. And whenever the word comes Copa America in mind, Lionel Messi comes in the mind at the same moment, because all the world is watching Lionel Messi, that if he is going to win the international trophy this year or not. Just because you remember that he just lost it in the final against Chile last year, when Lionel Messi missed that unfortunate penalty kick in the penalty shootout. So well, this year is another chance for Argentina, who started very low in the Copa America, but somehow they have managed to reach semi-final of the Copa America. So we just hope good for them, because many of the Argentinian players have said that they are trying to win it for Lionel Messi, so that he has an international trophy on his name. Let's just see what are the fixtures here. So in the quarterfinal it was Brazil versus Paraguay, which was a 0-0 draw at the full time, and on the penalty shootout Brazil knocked out Paraguay by 4 goals to 0. And then against Venezuela, Argentina won 2-0. Colombia lost against Chile 4 goals to 0 in the penalty shootout after drawing 0-0 in the full time. So it was quite unfortunate, because Colombia has been very fit this year in the Copa America. And then here is Uruguay versus Peru. It was an unfortunate event for Luis Suarez, who missed that unfortunate penalty kick that knocked them out of Copa America, as Peru scored all their 5 penalty kicks, because the full time score was 0-0. So Peru won 5-4 in the penalty kicks, and then the semi-finals are all set. The first semi-final is between Brazil and Argentina, and the other is between Chile and Peru. Well, all eyes are on Brazil versus Argentina. It's going to be amazing, terrific, mouth-watering. What else you can expect from such competition, where there is Lionel Messi and Argentina at one side and Brazil at the other side, and the other semi-final is against Chile and Peru. Well, we hope we will have another amazing match here, because Chile are the defending champions as well. One more thing to tell you is an interesting fact, that whenever Casemiro has played for Brazil, Brazil has never lost an international match, which is a mind-blowing fact. So we will see if Casemiro is going to play that match, and are Brazil going to knock out Argentina, or Casemiro is going to lose his first international match. So let's just see what happens. So the first semi-final is tomorrow at 5:20 AM Pakistan time, and the other is on same time, 5:30 AM, but on Thursday Pakistan time. The final will be on Monday 1 AM. So let's just hope good for the football in all these different tournaments, and enjoy this beautiful game. I hope you like this video, and if you do give a like, share, and don't forget to subscribe to this channel.